Ayan yung komtin naglabot kami ayat. Booking number 784 2023 Nabam Sonu versus PSC the PSC and water supply Basar Leparada district. आया क्या? ऑनलाइन में ना? ओके. हाँ जी सर ये है. सोनू अच्छा का जितना आप इंफॉर्मेशन मांगा है तो कुछ मिला है कुछ भी नहीं मिला ये जैसे कुछ नहीं मिला सर ये हम जो क्या कहते हैं डालने का हाँ ये क्या कहते हैं जो ये सब ये जो हमको चालन चाहिए इसकी या उसका बाद उसका बाद चालन मिला है कैसे है अभी ये कहेगा चालन बनाए अभी एक बात चालान किस चालान के लिए ये रुका जितना भी अपने से केवल उसका पास एक चालन बराबर फीस के लिए. और बराबर चालन कैसे भरते हैं ना तो वही चीज जो डिले करते इसलिए हम जो वो लोग का मतलब ऑर्डर को डिनाई किया है आप फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी में गया था वहाँ पे क्या बोला एक्चुअली फर्स्ट में तो किया था उसमें कुछ नहीं बस शिफ्ट किया ना हाँ तो शिफ्ट करके और ये किया होगा ये करके उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है किया ना मानना ये है कि उसको डिवीजन में मास्टर टेस्ट कर ये कर देगा उसका बाद से तो कुछ भी आया क्लास में फिर बिना के बाद हम यहाँ में सेकंड अपनी पीआईओ ऑनलाइन है yes afternoon the appellant is stating here that he has not been provided with any of the information that he has asked from your office. And what do you have to say on this? State you have given him the given him the notice to submit the amount of the requested fees. On the date 6 April. 6th April, Happy to look at it. February. That means ये जो फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी ने जब इनको आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए शायद बोला होगा इसके सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने अब जब फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी के पास गया ना तो आपको वो बोला होगा 1000 समथिंग कुछ डिपॉजिट करने के लिए तो वो इंफॉर्मेशन को आपको मिला है आप पहले भी बोल रहा था तो क्लियर में मिला सर एक्चुअली ये सार लोग जो ही कहना है कि जब क्या तपेजने वाला समय से भी ये करे ना इसलिए हम लोग तो जब ये शिफ्ट करने का वो समय से ही मिलता है हाँ वो कहने वाला आपका डेट उस समय से
लागू होगा जब पीआईओ आपका एप्लीकेशन को उसका ऑफिस में मिलेगा। अब पोस्ट ऑफिस से भेजने से भी it won't be counted from the day you send it through the post office, but it will be counted from the day the office of the PIO receive your application. So उससे it will count for 30 days. So within 30 days they have to give. There might be certain regions where PIO 30 दिन में आपको नहीं दे सकने वाला कोई कारण भी होता हो, तो वो कारण को आपका साथ बात करके आपको बताने से वो कारण भी हार्ड एंड फास्ट कोई कोई चीज को कंसिडर भी करना पड़ता है, तो ना टाइम इतना ही है, इसी टाइम में आप देना ही है, इसमें नहीं देने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो भी कभी कभी कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो इसमें तो PIO, can you tell us on which date you have got this application, the Form A of the appellant, if you have any idea on that? So, and then you wrote back to the appellant on 6th April. Yes, I can. Okay, yeah, I can well understand, and everyone in Arunachal Pradesh would agree to that. That in the month of that too, in the last part of March, so every office is busy with the public works, which cannot be avoided. एंड पीआईओ का कहना है, आप खुद सुन रहे हैं, उन्होंने आपका एप्लीकेशन को 16 मार्च को मिला है, 16 मार्च। तो उसी के चलते 16 अप्रैल एक महीना हो जाता है, जिसका अंदर में उन्होंने आपको फुल इंफॉर्मेशन देना है। उन्होंने आपको 10 दिन खत्म होने का पहले 6 अप्रैल को आपको 1000 कुछ रुपए जमा करने लिखा है। तो आप आज तक जमा नहीं किया, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास से बोल रहा है। तो अभी एंड प्लस आपका एप्लीकेशन भी 16 मार्च को हमने पहले भी बताया, उसके बाद उनको पूछा, उस दिन से काउंट होगा, 16 मार्च से काउंट होगा, 16 मार्च को उन्होंने आपका एप्लीकेशन को मिला। जी, तो 16 अप्रैल तक उनका एक टाइम है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो उन्होंने 6 अप्रैल को आपको लिखा कि 1000। जी यस, 6 अप्रैल को उसने लिखा है आपको जमा करने के लिए, आपने आज तक जमा नहीं किया। तो आप ऐसा कीजिए, आप पैसा को जमा कर लीजिए, चालान बना के आप खुद इन पर्सन जाके ले लीजिएगा, या तो वो लोग पोस्ट ऑफिस से आपका ये एड्रेस अगर सही है तो वो लोग पोस्ट ऑफिस से भेज देगा, लेकिन आपका वो चालान को मिलने के बाद ही वो लोग भेज पाएगा आपको। बिकॉज अभी आपके सामने ही बोल रहा है इन द ओपन कोर्ट दैट ही स्टेटिंग कि 16th of March they received your application. On the 6th of April they have returned to you. That means 6 अप्रैल तक आपका जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए था सब रेडी कर दिया था पीआईओ। तो 1000 1237 आप चालान करके सबमिट करके ले लीजिए। हमको तो एक तो याद है, मतलब अप्रैल में तो काम रिसीव नहीं किया जैसे हमारा वो चरण होना, सितंबर अप्रैल दिसंबर से और अभी तक तो 2 साल कंप्लीट होने वाला है, ये एक महीना बचा। जी, ये केस को एक्चुअली हम लोग को उस दिन दिया गया फर्स्ट टाइम ना, साल का अंदर आपकी पूरा 2 साल। हाँ 2 साल ही है अभी, ऑलमोस्ट ना अभी 1 मंथ ही रहता है अभी इतना दिन में। चलिए पहले देने से ठीक था, मुझे सबसे नहीं नहीं, ये आपका आपका जो एप्लीकेशन है फॉर्म है वो 16 मार्च को उन्होंने मिला, आपने भेजा है February 23 को।
24 फरवरी को आपने भेजा है, तो 24 फरवरी 2023 को उन्होंने मिला 16 मार्च 2023 को, और उन्होंने आपको वापस लिखा 6 अप्रैल 23 को। तो 1 महीना का पहले उन्होंने लिखा है आपको पैसा जमा करने के लिए 1227 रुपया। आप उसको चालान करके आप इंफॉर्मेशन को ले लीजिए। लेने के बाद आपका इंफॉर्मेशन फुल है कि नहीं है, हम लोग को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में आप बता दीजिएगा। नहीं, फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिला बोलने से हम लोग पूछेगा पीआईओ से कि क्यों, किस कारण से फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिला। आप इसको जमा करना पड़ेगा क्योंकि 1 महीना के अंदर में उन्होंने आपको दिया। तो आपका उस इंफॉर्मेशन को तो आप पहले खुद उनका बोलने का पहले आपने यहाँ पे कोर्ट में बोला कि आपको चालान भरने बोला है। तो दैट मीन्स उसका स्टेटमेंट तो अभी हम टेली करने से आप खुद डाइवर्स किया। तो पीआईओ भी वही सेम बात बोल रहे हैं, सिर्फ ये है कि उन्होंने डेट को एग्जैक्टली बता रहे हैं। सो पीआईओ, कैन यू do you have that copy of the letter written to the appellant on 16th of on 6th of April 2023? Do you have the copy of the? Okay, okay. So, so we'll fix the next date of. Yes, yes. He's in receipt of that letter because he has already admitted to that something. He didn't mention about the amount, but he has mentioned that he was asked to deposit some money through Chalan. So he has accepted that, and then whatever your statement is attested and authenticated by the appellant too. So we'll fix the next date of hearing, and then here I order him to deposit the requisite amount of the fees to your office and get the information. And after getting the information, the appellant will go through the information and verify as the information that he has asked for are completely given to him or no. So we'll fix the next date of hearing. Before that, वो next date of hearing के आगे में आपने वो चालान पीआईओ के वहाँ पे जमा करेंगे। आप इंफॉर्मेशन को ले लेंगे और आप देख लेंगे। अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन मिला है तो ठीक है, आप हम लोग को बताएंगे कि इंफॉर्मेशन पूरा मिला। अगर नहीं मिला तो भी आप आके बता दीजिएगा। हम लोग पीआईओ से कारण को पूछेगा कि क्यों फुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना। तो कौन सा डेट होगा? डेट तो ये करेगा सर, ये 16 जनवरी को ही रखना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है अभी ना। हम लोग का इतना सारा केस पूरा डेट एंड देन हम लोग लोग कर दिया। दिसंबर लास्ट पार्ट से जनवरी 8 तक कोर्ट हॉलीडेज है। हाँ, It's 16th December. नहीं, Yeah, जनवरी 16th January 2024. 2025। 25. हाँ, Yeah. So PIO, he will submit the requisite fees before you on or before 16th January 2025, and you'll give him the full information to him after receiving the fees from him. So we won't send you any date for the next hearing because you have been personally told about this. That is 16th January 2025. So you have he has to submit the fees on or before that date, and you also have to give the information on receipt of the fees from him. Okay, 16th January 2025. हाँ, उसका आगे आप कभी भी जाके जमा कीजिएगा और ले लीजिए, या तो कोर्ट में आप बेच सकते हैं। अब अमाउंट का यहाँ होगा 1227, वो कुछ कागज मिलेगी 1227। तो 16th जनवरी ना, ये अब 16 जनवरी में नेक्स्ट हियरिंग में हाँ, ना। उसमें बताइए हम लोग को मिला फुल इंफॉर्मेशन आपको मिला है कि नहीं मिला है। सेटिस्फाई है ना, सेटिस्फाई नहीं है। ओके, और नेक्स्ट 1170 रिया तारम वर्सेस पीएससी बोर्डूमसा।
CIO version ना. रिया ताराम का कोई कोई नहीं आया हम्म. यार बाहर में देखो तो कोई रिया ताराम है कि नहीं है नहीं नहीं है ना. Excellent is absent without intimation of his of the reasons of his unavailability to attend the hearing. The PIO is present online through online. Yeah, yeah. PIO, can you hear me? Oh, okay, good afternoon. Can I know if you have provided him some of the informations or not to the appellant as of now? जी 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 And the PIO states that the appellant has asked for information spanning 9 years, which which is too voluminous and as well as ambiguous as well as unspecific. RTI Act Section 6 clearly states that Section 6 Clause 1B states that information sought should be specific, as well as Section 7 Clause 9 also states that this information which would disproportionately divert the resources of the public authority cannot be provided to the applicant at the cost of deviating from public services by
revoting only time to the RTI applicants in, instead of providing services to the public. Statement, state, Statements of the PIO is justified for the fact that the RTI Act 2005 is incorporated by the lawmakers to provide information to the citizens of India, but not at the cost of letting the office of PIO devote their precious time and resources only for this Christian Simon. resources. Second is the send a summon to the appellant to be present in the next date of hearing, failing which this instant appeal would be decided ex parte. Mr. Piayo, herein I want to let you know that I'm also in the witness that the application of the appellant is really too lengthy and it is already presumed that the information would be quite voluminous, which for which for which we as the commission members also have to think for both the sides of the interest of the appellant as well as the interest of the public who is represented by the PIO, Public Information Officer. Yes, sir. So as he is absent today, uh, we have to give him a chance to be heard before you, along with you. So we'll fix the next date of hearing and we'll ask him to specify as to which of the informations out of the informations that he has applied for, he would prioritize to be given in the first go, because as the information that the years that he has asked for is 9 years, spanning 9 years, which is really too way a long time, and so we'll fix the next date of hearing on 16 January. 16th January 2025. And we'll ask from the appellant in front of you, and we'll ask him to specify the particular informations for for at least a single year or or 2 years or whatever be. We will see to it that your staff, your office is not disturbed at the cost of such. What do I say? I shouldn't be using, but there have been we have been witnessing that lot many RTI activists, they have filed cases wherein they are not at all interested with the information actually. Yes, there have been lot many cases where the PIO has uh, maintained or compiled all the information and asked the RTI activists to pay the fees through challan, but they have failed to come back. So this way, there have been lot many activists; those are not serious about their applications actually. So let us, yes, let us hear him out on the next date of hearing, which is on 16th of January 2025.
and then decide which of the information are to be provided to him. Obviously, we are here for giving the information to the activists, but not at such cost, wherein the office of the PIO is hampered, disturbed. So, 16th January 2025. Morning. 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 Morning, 10:30. Yeah, morning. Next, 169, Ria Taram versus PSC Rowing. rowing. PSC rowing का नहीं आया है ना? ऑनलाइन भी नहीं है? ऑनलाइन नहीं है ना? ओके. अच्छा, तब तो नहीं होगा. Both अच्छा. the PIO, the appellant absent without any intimation for his inability to attend the hearing, which 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 might even show that he's not serious with the appeal, and the PIO absent without intimating. वो वाला जो line है ना, as both parties are absent, the commission orders to send someone to both the parties, the PIO as well, and fix the next date of hearing, which is on 16th. But if the appellant fails to be present in the next date of hearing, the appeal would be decided ex parte. From 957, WRD Bombila, WRD Bombdila, Ria Taram versus WRD Bombdila. so the appellant absent without PIO है? सर मैं API हूँ. API. Okay, okay. API present. Assistant engineer. लिखा तस्सी. लिखा API. Authorization letter लाया है क्या? Authorization लेटर तो नहीं लाया है. वो बोमदिला डिवीजन के लिए दिया था ये में. वो लीव पे है, उसका चार्ज में मैं हूँ. Okay. तो नाम अच्छे से लिख के नहीं तो देखो ना. ये होने से. इसमें दरिया को जो ये बोमदिला सब डिवीजन का है, वो फिलहाल लीव पे है, उसका चार्ज में मैं हूँ. मैं असिस्टेंट इंजीनियर सब डिवीजन सिंचों का है. The PIO represented by the APIO. Yes. Lika Tasi. Yes. The assistant engineer Sing Chung. हम्म. Bombdila division. इसमें आपका क्या कहना है? कुछ इंफॉर्मेशन एपिलेंट को दिया सर नहीं इसमें दिया? आपको वो दिया है. उन्होंने सर मार्च में मार्च 3 को उन्होंने आरटीआई को विड्रॉ किया था, उसका एप्लीकेशन डिस्प्ले में इंक्लोज करके आपको ये वाला था. हाँ तो हाँ. उसका वजह से हम लोग रिलीव नहीं किया. उसको पहले बता अभी सर वही आपसे केस अभी एक टीआईओ सर ने बोला कि सेम एप्लीकेशन को मतलब सॉल्व किया जैसे सर लगता है कि उसमें इतना सारा सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम ये करके मांगा है. वो सर हम भी 3 साल में रेडी नहीं कर पाएंगे सर. The APIO states that the information source for इसलिए सर केस को डिस्पोज कर देने से too अच्छा लगेगा. lengthy and voluminous, for which it will be not
easy to provide all the information was sought by the applicant. And so the delay in providing the information the applicant till now. उसमें सारा But हम इसको reflect करेगा. But on 23rd March 2024, the applicant himself has written to the AIO stating the desire to withdraw the RTI application, a copy of which is presented by the APIO today in the court hearing. Relying on the letter of the applicant himself to withdraw the application, withdraw his Form A application. The need for proceeding on with the instant appeal is not judicious, and hence the case is disposed of. A copy of the disposal letter being made available to the applicant. We have disposed the case. Yeah. Yes. We are Taram and from Executive Engineer WRD Pasigat. He's online, I think. Yes. But the excellent option without information. And PIO is present online. Yes, PIO, can you hear me? नहीं सुन रहा है. Yes, yes, now. So, can you? Yeah, the appellant has not turned up today without any intimations to this court. But let us, as you have, as you are here online with us, let us hear you out. Can you tell us? Have you furnished any of the information to the appellant till so far? जी जी जी. So the PIO states that the application is sought by the appellant is too voluminous and spanning for some 16 or some yes, so 7 years.
And therefore, the PIO has written a letter and intimated to the appellant stating that the application that he has made, the information for which he has applied, will not be cannot be provided to him in one go, as the information is too voluminous for even one single year, and he has asked for 7 years, and the amount, and the PIO also has informed the appellant that the cost for providing the information for only one single year, that is 2022 to 2023, is amounting to rupees 11,000, for which he has requested the appellant to submit the said amount and to receive the information for that information that he has sought for the year 2022-23. The PIO has tried to specify and scrutinize as well as simplify the complex application of the appellant in the interest of the office that the PIO holds, because the PIO's office has to devote their 70% of the time to public service rather than engage in providing informations which are too voluminous and also which are spanning to too many years. But till date, the appellant has not reverted back to the office of the PIO in terms of the request from the office of the PIO to provide him the information. The appellant being absent without any intimation for the reasons of his absence, the proceedings of the appeal could not go ahead because the appellant also is to be given a fair chance of being heard, and therefore the commission ordered to send a summon notice to the appellant to be present in the next date of hearing, failing which the appeal would be decided ex parte. And the next date of hearing is intimated to the PIO, which is fixed on 16th January 2025. So, Mr. PIO will fix the next date of hearing on 16th January 2025. As the appellant has not turned up to the hearing, we also need to give him a fair chance of being heard. So we will hear from him also. And then that day, if he is absent that day, we will decide as to, out of all the information that he has sought for,
which of the informations are to be provided. We'll decide it in the next day, and you can come as usual online that day also. You don't need to take pain and come over here. 10:30, na? 10:30 a.m. 16th January. Next, 9/4/2023, Ria Taram versus WR. You are the name, Google Olen, AWRD, hello. Google Olen, AWRD Arno is present representing the DIO with the authority letter from the DIO. The appellant absent without intimation to the commission. The reasons for his absence. अच्छा, इसमें what do you say on this? Have you given some of the information to the appellant or no? सर हम लोग को सर ये फॉर्म यही नहीं मिला सर। Okay, नहीं मिला अभी तक। लेकिन सर अभी पता चल रहा है कि सबको एक ही फॉर्म दिया हो, हाँ, सबको एक ही तो डिवीजन को मार्क करके भर दीजिए। अभी जैसे हमसे पहले फॉर्म मिला आया आपके पास से हाँ। आया ये हम लोग लेकिन हम लोग को सर नहीं मिला फॉर्म। the representative of the DIO states that they have not yet received the Form A application of the appellant. So it's pretty significant mistake. 1907. लेकिन इन्होंने आपको एक 1920 जुलाई को पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा है। उसका एक रिकॉर्ड है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का, लेकिन आपको नहीं मिला। इसके कौन सा इंफॉर्मेशन उसको हाँ, and therefore the DIO's office is in dark as to which of the information, what information the appellant has shown. To help out the interest of the appellant, the commission hereby provides the Form A application of the appellant to the representative of the DIO. आप एक बार इसको ना स्कैन कर लीजिए मोबाइल टेलीफोन से ना, तो उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगा है और आप आपका ऑफिस इसको देने में सुविधा होगा कि नहीं होगा, और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देने के लिए लीगली बाउंड है आप, ऐसे सभी इंफॉर्मेशन कभी कभी ये लोग मांगता है जो एग्जाम्प्टेड भी है, तो वो सब कभी आप स्क्रूटिनी कीजिएगा, एंड देन उसको देखने के बाद आज से लेके नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक का पहले कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप दे सकता है उनको कवर करके दे दीजिएगा, और कौन 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 सा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, और ये इंफॉर्मेशन पूरा आप अभी अभी देने में सक्षम नहीं है तो भी आप यू राइट द रीजंस फॉर इट एंड देन सेंड इट टू द appellant. यही उसको हम हमेशा बोलता है ऐसे मत करो करके, he is always giving the interest of the public place. अच्छा, ये होटल रिवरव्यू लिखा हुआ है, कभी ये आदमी होटल चांदनी लिखता है, कभी होटल प्रीति लिखता है, और एक
ऐसा हुआ है जहाँ में हम डिस्पोज ऑफ कर दिया। एक पीआईओ ने बोला कि हमने इंफॉर्मेशन भेज दिया, तो वो बोल रहे हम नहीं मिला है। अच्छा, पीआईओ के पास में वो पोस्ट ऑफिस का सब रिसिप्ट है, तो वो बोला है कि हम नहीं मिला। तो हम बोले ये वो तो एक पब्लिक प्लेस है, अभी द ऑनर्स ऑफ प्रूविंग पीआईओ को होना चाहिए था, लेकिन एज इट इज अ पब्लिक प्लेस वी विल प्रिज्यूम दैट इट हैज बीन डिलीवर्ड टू यू। क्योंकि पब्लिक प्लेस में होटल में होने के बाद क्या करेगा, दे विल सी कि अरे रिया ताराम नाम का कोई कस्टमर है क्या, अगर उसमें रजिस्टर में रिया ताराम नाम तो नहीं है, तो उसका कागज को तू वो डस्टबिन में फेंक देगा। डस्टबिन में फेंकने का दैट गोज टू द वेस्ट डिस्पोजल। इसलिए हम उसको बार बार सिखाते रहता है, ये आदमी को रिया तारा लॉ स्टूडेंट में बोलता है। तो अभी वॉट एवर बी यू गो थ्रू इट एंड सी व्हिच ऑफ द इंफॉर्मेशन you will be able to provide ये और एक पेज। that's the first page। how बाकी नहीं है, वो जरूरी नहीं है आपको। हाँ, वो फर्स्ट पेज है, वो सेकंड पेज, उसका स्कैन कीजिएगा। वो लोग ये बोल जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो आरटीआई मेनली इट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपका पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए तो कोई कोई चीज है सिर्फ, लेकिन सारा बाकी बात पब्लिक इंटरेस्ट को जो है उसी को हम लोग देने के लिए जनरली हुई। आप उसको देख लीजिएगा ना, देख के आपका पीआईओ से डिस्कस करके डू लेट अस नो इन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग if you are not in the capacity in 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 the capacity to come here, like you are so engaged, preoccupied, then you can come online. The other PIOs have done. No, ask your PIO to come online if he can, because he would be the first better person to know about the details. No, because you are just the A of a subdivision maybe. So he has asked for the entire division. So you might not have the full information. Or basically, we are here to see that the full information is given to the appellants, but not at the cost of harassing a PIO's office, not at the cost of disturbing or letting deviate the precious time of the PIO's office just for RTI RTI matters. It's a neo. So we are here to see justice is being done to the appellant as well as the PIO. So the representative of the PIO has received the form A application of the appellant from the commission. And commission is ordered the PIO to provide the information on or before the next date of hearing. The information which are not exempted or which are not not contravening the provisions of the RTI Act. Second, to send a summon notice to the appellant to be present in the next date of hearing, failing which is the instant appeal would be decided ex parte. And the next date of hearing is intimated to the representative of the PIO, which is on 16th January 2025, 10:30 a.m. Sign the नेक्स्ट जो है 950 Valenla. वालेंला वर्सेस आरडब्ल्यूडी Euphoric. Very great. पेपर दे दिया हमने। हाँ हाँ पेपर दे दिया तो कैसे मेरा वो साथ में अगर आज इसके सुनकर अभी मिनिस्टर नागा में आ रहा है, इसके वो इतना नहीं कर पाएगा। इसको डिस्पोज है, लेकिन थोड़ा नियम तो वो डिस्पोज सुनने में कहा करने से पहले आपको देते हैं। अच्छा हाँ Sabariba ये सब में यही आदमी RWT Raga subdivision representing the PIO and the appellant present. तो इनको सारा सब इंफॉर्मेशन दे दिया सर। मेरा ग्रुप इसको डिस्पोज करने फीलिंग
मेरे को भी ये कंप्लेनर भी नहीं आता बोल के मैडम का पास में आपको स्थिति बचा है एक्सीलेंस states that he has received the information completely Yes, sir. उसका 950 and by your or 820 820 ये दोनों same होगा ये अलग है ये हाँ ओ हाँ इसका किस ये 950 ये किसके केस है ये अपने कर दीजिए वो अभी दिया ही था 950 दोनों का में ना हाँ दोनों को इसको डिस्पोज करेगा बोला ना दोनों को लेकर मिलाए बोलते ना the appellant present and stating that the informations have been received in full and therefore there is no further necessity to proceed on with the hearing. तो अच्छे से वो हमें बनाएगा होगा and so the case the appeal is for from reversal भी होता हाँ जब ये सब है हाँ ये दोनों का वही सेम ऑर्डर है दोनों का सेम ऑर्डर है सेम होगा ये दोनों का जीरो डिस्पोज एंड करा हाँ साइन कर लीजिएगा अभी 826 ये है पालिनला वर्सेस डब्ल्यूडी रागा पीएससी रागा हाँ पीएससी रागा काबले डिस्ट्रिक्ट है ना आया नहीं है ना 826 हाँ पालिनला वर्सेस पीएससी ये पीएससी रागा कमले ये आया ना ये 826 का एपिलेंट ना आप जो हाँ हाँ appellant present mayor वो वाला sentence हाँ वो वाला होता है okay yes हाँ and the mayor is sent the proceedings of the appeal could not be carried on and therefore the commitment of the person is among of these people be present in the state of the hearing in which appropriate action is initiated against the guide as per the provision of Adhyaya 2000. Next date of hearing be fixed on 16 January 2025. 10:30 p.m. Then no necessity to and the person of this of the information for the next date of the but that's बना लेगा होगा तो नेक्स्ट वो जब नहीं आया तो हम लोग को एक चांस देना ही पड़ेगा दो चांस एक दो चांस देता ही है तो उसको आने दीजिएगा हम लोग एक समन भेजेंगे उस समय सुनते हैं 16 जनवरी 16 जनवरी 2025 हम लोग इतना केस ऐसे हाईकोर्ट में भी नहीं होता दिन में नहीं बोलने से भी 20-25 केस होता है इसलिए आपका केस सोच के कि आज का 16 जनवरी तक बात है नहीं तो नेक्स्ट मंथ ही हम लोग करना सर क्या करेंगे सर ये पीआईएल जब
कोई फॉर्म में देने थे याद नहीं है हाँ वही ठीक है ना तो वो मैं का पूरा तो इवन सर ऐसे है कि हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं कभी कभी बोलता नहीं मिलता है तो कभी कभी हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं हम तो रखा गए हैं ना जी तो जाने से वहां में खुद तो आता नहीं और इसका पता नहीं मना करता है आते पेपर है रिसीव मत करो ऐसे ऐसे आ ये भी आपका ही है नेक्स्ट 819 वीडियो Kalinla versus Raga Dipidio जी भी नहीं हाँ Raga Kamle आप ही है ना जी नहीं है नहीं है ना सेम ऑर्डर लिखो इसमें भी हम्म, सेम ऑर्डर जो प्रीवियस वाला में था होगा हाँ। और सेम डेट में आप नोट कीजिएगा तो ये भी है कमले का ये भी नहीं है 829 पावर वाला हाँ ये है पावर वाला हाँ इसका भी सेम डेट होगा सेम ऑर्डर जाएगा सेम सामान होगा हम्म, और नेक्स्ट महीने आने से हम लोग वो स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेगा मजाक कोई कोई पीआईओ नहीं समझ के मजाक भी समझते हैं ना सबको डिसिप्लिन रिएक्शन भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं होगा आप 16 जनवरी को तो ये मॉर्निंग बोला ना जी हाँ मॉर्निंग को ये भी सेम ऑर्डर जाएगा हाँ बस इवनिंग को है ना जी हाँ